उसको करप्ट बोल दिया, कितना बुरा लग गया जुडिशरी को। हाँ, तो कल भी न्यूज में था, आज भी न्यूज में है, राइट। एंड प्रधानमंत्री तो उसको बुलाने वाले हैं जिसने वो किताब लिखा है बेसिकली, राइट। इज इट a hidden fact that there is no corruption in judiciary? Everyone knows. Chalo, today I'll discuss about Indian judiciary. Let's see how much we are able to do it today. हाँ हाँ बच्चा, और इतनी जल्दी? You are the person who asked कि सर कब तक खत्म होगा। Okay, but see, I have finished and I have not, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, I have done everything. मैंने बातें कम की है, that's a different point. मैंने बातें कम की है, that is a different point. But yes, I did not initiate the talk. I thought कि थोड़ा सा वेट करते हैं, but ठीक है, चलेगा. No, I'm supposed to teach here. I don't know. It totally depends on the management who will, give me assignment. वो जो भी assignment देंगे, I have to teach. ठीक है, चलो आज है हमारा Feb 27. And we'll talk about Indian judiciary. Yesterday I made a table of Indian judiciary के बारे में बनाया था ना, judiciary के बारे में बताया था ना, table के बारे में. If you look at the judiciary's table, right, the Supreme Court fall under this, High Court fall under this. Right. If you look at the Supreme Court, covered under Article 124 to 147. High Court covered under Article 214 to 231, and the subordinate court basically covered under Article 233 to 237. ये कल मैंने बताया था ना, टेबल ये बताया था, ये वाला बताया था, ठीक है. मुझे लगा कि मैंने नहीं बताया था. Now come to the Indian judiciary. If you look at the certain introduction about Indian judiciary first, then I'll tell you the structure. Indian judiciary or judiciary of any country is, protector and guardian of the liberty, right? And also protector and guardian of the constitution. Okay? And judiciary also resolve the disputes between states and between center and state. Okay? It is an essential part of any federal country. Okay? Otherwise, now look at the India's judiciary structure. It is very much paramedical. At the top you have Supreme Court, below the Supreme Court you have High Court, below the High Court you have District Court. District Court के नीचे क्या होता है? Sub Divisional Court, right? और Sub Divisional Court के नीचे कॉल ग्राम न्यायालय. Gram Nyayalaya. Now look at Indian judiciary. The Constituent Assembly created an independent and integrated judiciary. इस नेचर क्या था जुडिशरी का? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड.
Now, what do you mean by independent judiciary? Yeah, separate from, very much separate and free from any control from the executive and the legislature. Okay. Now consider that is called independent judiciary. What could be the opposite to the independent judiciary? अगर मान लो कि कोई independent judiciary है, उसका opposite क्या होगा? Committed judiciary. Yes. Look at, if judiciary is not independent, it is called committed judiciary. Right? No. Now, in Constituent Assembly, sought to establish an independent and integrated judiciary, independent from the executive and legislature. If you look at Article 50 of the DPSP, it states that the state shall separate the judiciary from the executive. Separation of power होगा वहां पर, ठीक है? But do you think that Indian judiciary has been independent? No? Yes? Acha. When no, yes, there's a gray area. There is a gray area. Sometimes Indian judiciary may reflect you as a independent, right? Sometimes it may reflect you as a committed judiciary. Sometimes in between you can find, right? But अब तो सबको बहुत बुरा लगता है, किसी को कुछ बोल दो ना, becoming critical is a very much dangerous. अब किसी को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट इज entire, there is a corruption in entire system. तो करप्शन इन इंडियन जुडिशरी पे एक कॉलम क्या लिख दिया, तो पैराग्राफ ही लिखा हुआ किताब है तो, राइट? जुडिशरी को इतना बुरा लग गया कि कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो मैं आई विल टेक एक्शन, एंड इट इज अ सुओ मोटो. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेकिंग दैट. हाई कोर्ट से भी नहीं आ रहा है. कम इनसाइड. Now, let me give you a few examples where you can see Indian judiciary is a very committed judiciary, and few examples where you can find in judiciary is very much independent. Right? Let's go for independent judiciary first. आपने केशवानंद भारती का नाम सुना है? केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? The executive, the government cannot damage the basic structure, right? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आप डैमेज नहीं कर सकते. और भी है, जैसे पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी का जजमेंट सुना है? क्या बोलता है केस पुट्टास्वामी में, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट? What was the case Puttaswamy judgment? Didn't I teach you? Yes, what was Puttaswamy judgment? प्रियांश रहता तो बोलता वो. वो बोलता. He does revision. Right to privacy, it's a basic one. Right to privacy is a fundamental right protected under Article 21. Yes, right to privacy, Muskan. Very good. ठीक है, जब कोर्ट बेसिकली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कह रही कि नहीं प्राइवेसी नहीं है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं प्राइवेसी है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एवरी इंडिविजुअल लाइफ. ठीक है, क्योंकि सरकार को प्राइवेसी चाहिए नहीं, बट इंडिविजुअल को चाहिए, एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज come forward in order to protect the privacy of an individual. So these are the judgment which reflects you that judiciary is an independent judiciary we have. Now come to the committed judiciary. Any example that comes to your mind that showed that reflects Indian judiciary is a committed judiciary? First, what is committed judiciary? What is the meaning of committed judiciary? The judiciary which follow the direction of the executive. तुम्हारा बेटा जिएगा तो भी हाँ जी, तुम्हारा बेटा मरेगा तो भी हाँ जी. ठीक है, कुछ इलाके में कुछ डांस होता है, वो बस हाँ जी करता रहता है, और गाने वाले अगर कुछ भी कह दे उसमें भी हाँ जी बोलेगा. Now that हाँ जी is not good. Now have you seen such attitude of Indian judiciary that has made
agreement or concurrence with the executive. Any judgment that comes to your mind? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई जजमेंट आ रहा है आपको जो पता चले कि भाई इंडियन जुडिशरी वही मान रही है जो सरकार कह रही है? बहुत सारे जजमेंट है, नहीं आ रहा है दिमाग में. लेट मी टेल यू वन जजमेंट. हैव यू हर्ड अबाउट एडीएम जबलपुर? एडीएम जबलपुर जजमेंट, इसको शिवकांत शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हैबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं. क्या था ये? Yeah, during emergency, what happened? Suspension of the rights. Executive has issued an ordinance. Executive ने क्या किया? एक ordinance निकाला और कहा कि if someone's right to life is sacrificed, right, they cannot have access to judiciary under Article 32 to protect it. Now Supreme Court ने कहा the five judges were there, except one judge, HR Khanna. HR Khanna dissented. Rest all the four judges accepted that this is true. Now, ADM Jabalpur case reflects Indian judiciary is a committed judiciary. HR Khanna, उन्हीं का भतीजा संजीव खन्ना भी चीफ जस्टिस बना था. ठीक है, अभी जो हमारे पास जज हैं इससे पहले के पहले. Yeah. Not only ADM Jabalpur, if you look at the basic structure doctrine, right? Indira Gandhi did not basically follow the seniority principle in order to appoint judges, right? And then you have four judges के सभी appointment में पढ़ना पड़ेगा, right? So ADM Jabalpur reflects the judiciary as a committed judiciary. What about PMLA judgment? बताया है PMLA judgment? मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023. बताया है, सब फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा चुका मैं, राइट? फंडामेंटल राइट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है. क्या था पीएमएलए जजमेंट? पीएमएलए जजमेंट था, मैंने आपको पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये बना था एक्ट कब? 2002 में. किसके लिए? टेररिस्ट के लिए. 2023 में क्या होता है? इसको रिवाइज करते हैं, अमेंड करते हैं, and it is applicable to the general public. Now, what this law all about? This law empowers ED, Enforcement Directorate, to arrest a person even on the name of suspicion or suspicion. ठीक है? Now, in general way, अब लोगों को एफआईआर करना पड़ता है, तब केस शुरू होती है. यहाँ पर एफआईआर नहीं करना है. ये नहीं कि ये मेरे खिलाफ गए और सर के पास बहुत पैसा है, जरा जाके देखो ईडी आपका. नहीं, ईडी कैन टेक देयर ओन एक्शन. दे कैन फाइल EDIR, right? Enforcement Directorate Information Report, and arrest a person. ठीक है? In general, arrest होता क्या है? The person need to be presented in the nearest court before the magistrate within 24 hours. यहाँ पर कोई clause नहीं है, right? Well, if you look at in general case, in general law, the person is not guilty, right? Innocent until proven guilty. यहाँ पर क्या है? Person is proven guilty until he himself prove is innocent or she is innocent. अरे चीफ मिनिस्टर तक इसमें, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर गए हैं पीएमएलए जजमेंट में, राइट? उसमें अरविंद केजरीवाल है, बहुत सारे लोग गए इसमें. लास्ट ईयर, ये तो 2023 में आया है. लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट ईयर
There is a question in judgment during the question hour. How many people have been arrested in PMLA judgment within a year? 5,000 people have been arrested under the PMLA, and 95% was from the political opposition. संजय सिंह, जो अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, हेमंत सोरेन, बहुत लोग अरेस्ट हुए थे इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? ये लॉ सही है भाई, आप बिल्कुल मस्त से जाइए, किसी को अरेस्ट करिए। आपको मजाक लगेगा, एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए के लिए। मिसमैचिंग हो रही थी। Now look at this judgment. Look at have you heard about Gautam Bhatia? Gautam Bhatia is a well-known lawyer, legal scholar, right? And he argued that in India, judiciary is evading what? Justice. Now होता क्या है, जब हम टैक्स इवेड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? टैक्स इवेजन बोलते हैं ना, बोलते ना कि जो ड्यू था आपने नहीं दिया, टैक्स चोरी की आपने। Now judiciary has to deliver justice, but it is not doing that, right? It is evading justice, isn't it? Now look at committed judiciary. So you can see Indian judiciary is also independent, but somehow there are many judgments which reflects Indian judiciary is also a committed judiciary. Preventive detention is justified for money laundering. Yes, Priyans. Right? Now, what do you mean by integrated? Integrated means, right, there is a hierarchy in the judiciary. At the top, there is a Supreme Court. Below the Supreme Court, there is a High Court. Below the High Court, there is a District Court. Right? So, there is a hierarchy. Right? And the Supreme Court is the highest court of appeal. Now, before independence, Supreme Court was not the highest court of appeal. Right? इसको बोलते थे फेडरल कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा. And what was the highest appeal of the highest court of appeal? Privy Council. Privy Council in England. That was the highest court of appeal. But look at the Supreme Court is the highest court of appeal. Got the idea? Now, Indian judiciary is the third branch of the government. Right? And if you look at Indian judiciary is independent and integrated. Okay? Independent means independent from the executive. Now look at Article 124 to 147 talks about the judiciary, the appointment, okay? Then power of the judiciary. Similarly, Article 1214 to 231, it talks about High Court, the appointment, the power and authority of the High Court, right? Okay? And similarly, Article 233 to Article 237 talks about, again, the entire process, power and authority of the subordinate court. Ajay. ठीक है? अब इंडियन जुडिशरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या काम दिया? इनको 3, 4, 5 काम दिया. एक तो इंडियन जुडिशरी को इसलिए बनाया गया कि भाई कोई झगड़ा हो स्टेट के बीच में, राइट, कोई फेडरल डिस्प्यूट्स हो, उसको आप रिजॉल्व करोगे. दूसरा काम ये दिया गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, लुक एट during independent India, during freedom struggle, leaders were very, very cautious about fundamental rights because rights were crushed by the British authority. So we have established a strong, rights regime by introducing Part 3 of the Indian Constitution. The fundamental right which is justiciable. और justiciable मतलब क्या है? It is a judiciary who is responsible to protect the fundamental rights of individual. चाहे वो citizen हो या non citizen हो. Fundamental right में है ना? So there are certain fundamental rights which are essentially for citizen, but there are fundamental rights which is available to all. ठीक है? Now तीसरा काम दिया गया कि
इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने मरोड़ने मत देना. You are the final interpreter of the Indian Constitution. You are the custodian of the Indian Constitution. You have to protect it, right? So you are like guardian of the Indian Constitution, right? And one work that is adjudication. Follow the rule of law. Let's see the law prevail. And okay, let's just prevail the law. ये काम इंडियन जुडिशरी को दिया गया, right? And Indian judiciary has started its work, ठीक है, at the eve of basically 24 जनवरी को ये काम शुरू हुआ था, right? So this is basic information about Indian judiciary. Then I'll follow Supreme Court. अच्छा, इसके अलावा और भी है. इसके अलावा ये जो जस्टिस सिस्टम में केवल यही नहीं है, राइट? जस्टिस सिस्टम में एक और भी है जिसको हम बोलते हैं ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. यहाँ पर लोक अदालत आती है, फैमिली कोर्ट आता है, ट्रिब्यूनल्स आते हैं, ये सब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आता है, राइट? बट मेन स्ट्रीम जुडिशरी यही है. बट आइडिया मेन स्ट्रीम जुडिशरी. थोड़ा कुछ बातें इसको लिख लीजिए. Indian the Constituent Assembly adopted an independent and integrated judiciary. The Constituent Assembly adopted an independent and integrated judiciary. The Indian Constituent Assembly adopted, or the Constituent Assembly adopted an independent and integrated judiciary. Now, next point, an independent judiciary implies free from any control, from the executive as well as from the legislature. ठीक है. Next point you write, like there are many instances, which reflects Indian judiciary is an independent public institution. Indian judiciary is an independent public institution. An independent public institution. Next point, however, there are instances which reflects Indian judiciary is a committed judiciary. There are instances which reflects Indian judiciary is a committed judiciary. Okay, for example, ADM Jabalpur case. ADM Jabalpur case. Okay. Committed judiciary is not good for any democratic country. Committed judiciary is not good
for any democratic country. Committed judiciary is not good for any democratic country. Committed judiciary is not good for any democratic country. It is an independent judiciary. It is an independent judiciary. It is an independent judiciary which are able to protect, civil liberty and political rights, which able to protect civil liberty and political rights. What idea? Now that's your own independence. Now change the point. Next point you write. Okay. Indian judiciary is an integrated public institution. Indian judiciary is an integrated public institution. Indian judiciary is an integrated public institution. At the top there is a Supreme Court. At the top there is Supreme Court. At the top there is Supreme Court. Below the Supreme Court, there is a High Court, followed by District Court, followed by District Court, Subdivisional Court, and Gram Nyayalay, and Gram Nyayalay. And Gram Nyayalay. The Constituent Assembly had given two essential assignment to the Indian judiciary. The Constituent Assembly had given two essential assignment to the Indian judiciary. Essential assignment to the Indian judiciary, which are followings. First, to protect and safeguard individual liberty, individuals' civil liberty. Second, to protect and defend Indian Constitution. Third, to interpret the Indian Constitution, to interpret the Indian Constitution, to interpret the Indian Constitution. Next, to resolve federal disputes. To resolve federal disputes. फेडरल डिस्प्यूट्स, बाद में बात करेंगे फेडरल डिस्प्यूट्स के बारे में. नेक्स्ट वन मोर, टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ, टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंट इट,
to follow the rule of law and implement it. ये बेसिक काम इंडियन जुडिशियरी को दिया गया था, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे ना, क्या है कि यूएस में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है। यूएस में डुअल कोर्ट है। डुअल कोर्ट मतलब जैसे डुअल गवर्नमेंट है वैसे डुअल कोर्ट है, राइट। जैसे डुअल लेजिस्लेचर है, वहां पर डुअल डुअल एग्जीक्यूटिव है, डुअल कोर्ट भी है। डुअल कोर्ट का मतलब है जो टॉप का कोर्ट है, जो जिसको हम यूनियन कोर्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट, और जो स्टेट लेवल का है उसको बोलते हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपीलिंग, मतलब स्टेट द कोर्ट विच इज लोकेटेड इन पर्टिकुलर स्टेट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन केस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। फेडरल कोर्ट तभी मैटर देखेगी जब वो 3-4 स्टेट का हो चुका है मामला, ठीक है। जैसे अभी एबॉर्शन का मामला था कोर्ट में, राइट, एंड द फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका हैज टेकन वेरी रिग्रेसिव, you know, very regressive judgment, ठीक है। And women protested against it. They were talking about my body, my rights. It denied abortion, right? Anyway, so तब फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट क्या देखती है? फेडरल कोर्ट देखती है जब झगड़ा हो जाए तब, राइट। कोई भी फेडरल मैटर है तो फेडरल देखेगी, अदरवाइज क्रिमिनल एंड सिविल मैटर वहां की सुप्रीम कोर्ट देखती है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का है। We don't have dual, it is very much integrated one, समझ में आया, राइट। वी डोंट हैव डुअल, इट इज इंटीग्रेटेड वन। मैंने आपको बताया कि 1950 से पहले हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या था? प्रिवी काउंसिल। उसके बाद क्या बना है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो आई थिंक वी शुड मूव टू, अच्छा, यूके में क्या है? व्हाट इज यूके? upper house. व्हाट इज अपर हाउस? So, Yes, House of Lords is हाउस ऑफ considered लॉर्ड्स as एज द हाईएस्ट कोर्ट, यस यस यस। उसके बाद उससे उससे नीचे वहां पर रीजनल कोर्ट है। स्कॉटलैंड के लिए अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए अलग है, इंग्लैंड के लिए अलग अलग है, तीनों के लिए अलग अलग है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वही है, राइट, जो जिसमें लॉर्ड बैठते हैं और लॉर्ड उनको सुनते हैं, राइट। तो वहां पर रीजन बेस्ड है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इनॉग्रेट कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का? इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, राइट। इट्स January 28, 1950. It succeeded the. Now, what is the composition of the Supreme Court? Let me talk about Supreme Court now. Right. Right. Supreme Court. Supreme but infallible, right? Not infallible. अब ये आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर? पार्ट 5 एंड आर्टिकल 124, 124 ही तो है, 124 टू 147, राइट। ठीक है, लिखिए जरा, लिखिए तो 2-4 लाइन। आर्टिकल 1 पार्ट 5 of the constitution, and from article 124 to 147, part 5 of the constitution and article 124 to 147 deals with appointment, procedures, structure. Part 5 of the constitution and article
from Article 124 to 147 deals with appointment, procedure, structure, power, and functions of the Supreme Court. Power and functions of the Supreme Court. The Parliament is authorized. The Parliament is authorized to regulate the Supreme Court by law. The Parliament is authorized. The Parliament is authorized to regulate the Supreme Court by the law. Now look at composition. Composition क्या है सुप्रीम कोर्ट में? 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस. अच्छा, ओरिजिनली क्या था जब 1950 में क्या था? 7 प्लस 1. या 1 चीफ जस्टिस एंड. अच्छा, ये कब किया गया है? बेसिकली इट वाज डन एक्सटेंडेड इन 2019. Right? So write composition. Right, there are 33 judges and 1 chief justice. There are 33 judges and 1 chief justice in the present Supreme Court. Okay, the Parliament determines the strength of the Supreme Court. The Parliament determines the strength of the Supreme Court from time to time by the law. The Parliament decides the strength of the Supreme Court from time to time by the law. Right? Okay, the current strength of the Supreme Court is based on the Supreme Court number of judges. Amendment Act 2019. The current strength of the Supreme Court is based on the Supreme Court number of judges Amendment Act 2019. In 1950, the composition of the Supreme Court was 7 plus 1. 7 judges and 1 CJI. एक चीफ जस्टिस एंड 7 जज था. तो ये हो गया कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का. अब आ जाओ थोड़ा सा अपॉइंटमेंट, विच इज अ मोस्ट कंट्रोवर्शियल. राइट, नाउ कम टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. अब देखोगे कि जो आर्टिकल 1 to 4 है, और basically talks about the appointment of judges in the Supreme Court, and Article 217 talks about appointment of judges in the High Court. ठीक है. अब ये कहता है the President shall appoint judges, after the consultation of the Chief Justice of India. Right, in a single, very simple word. Who will appoint the judges? The President shall appoint judges
with after the consultation of the Chief Justice of India. Now look at the appointment of judges who had a one norm, that was seniority. जो भी सीनियर होते थे उसको एग्जीक्यूटिव मतलब उसको अपॉइंट कर दिया करती थी जजेस के लिए. ये कहानी हुआ 1973 में. और हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द केशवन भारती केस. Indira Gandhi actually confronted with judiciary. Indira Gandhi के टाइम पे, if you look at, there's a confrontation between judiciary and government. इनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन था, जो कि मैंने आपको डीपीएसपी के वक्त बताया है, फंडामेंटल राइट्स में काफी बताया है कि देखो किस तरह से ये बोलती थी आप ये नहीं कर सकते थे, ये अमेंडमेंट करके कर देते थे. राइट. 1973 में क्या हुआ? केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया. उसमें आपको बताया मैंने कि उसमें कितने जजेस थे? 13. 6 ने कहा कि आप नहीं कर सकते, 6 ने कहा आप कर सकते, 1 ने कहा कि आप कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए. राइट. एक ही जज था, एसएमसी क्री. अब हुआ क्या कि 1973 में जब अपॉइंटमेंट करने का टाइम आया तो इंदिरा गांधी अपॉइंटेड एन रे and she bypassed 3 senior most judges of the court. ठीक है. Now all 3 senior most judges of the Supreme Court resigned immediately. What idea? Now in 1976 she did again one another thing. She appointed M.H. Bagh as a CGI by bypassing 2 senior most judges of the Supreme Court, and the 2 senior most judges of Supreme Court immediately resigned from their post. Right. Now what happened? The case came in front of the Supreme Court regarding appointment. Right. और केस का नाम था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ये केस आया था 1982 में रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट. कब आया था? 1982. किसका नाम था? एसपी गुप्ता. राइट. वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि आप थोड़ा यू मस्ट एक्सप्लेन द वर्ड, द फ्रेज कंसल्टेशन विद सीजीआई. द प्रोसीजर जो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और 217 जो क्लॉज में है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट after the consultation with the CGI. To explain the phrase the consultation with CGI, whether it is a mere opinion or the decision, suggestion given by, furnished by the CGI is complementary to follow. It is necessary to follow. Now here if you look at in 1982 the Supreme Court held that the expression consultation with CGI does not mean concurrence. Right? It is a mere opinion. Right? This is called false judges case. इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट इसने कि भाई देखो कि आप जो वर्ड है, फ्रेज है कंसल्टेशन विद सीजीआई does not mean concurrence, it means mere opinion by the CGI. अब फिर ये केस फिर से अपेयर होता है 1993 में. राइट. और इस बार फाइल करने वाले पेटिशनर कोई और था. ठीक है. पेटिशनर था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन. राइट. सो केस का नाम पड़ा सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 में. अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा द फ्रेज consultation after CGI does not mean concurrence. Right? The president is bound to follow the advice given by the CGI, and president will not ask only the CGI, he will ask CGI plus 2 senior most judges.
the two senior most judges. Right. Now this is called second judges cases. Second judge case. Now this case again appeared in 1998. यहां पर तो बवाली हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि the phrase consultation with CGI means concurrence basically, and the president shall ask CGI plus a collegium of 4. ठीक है, तो ये CGI plus collegium of 4. Now look at here, the collegium system has been established. Now many scholars called it in empire within empire. Judiciary itself is a big empire, right? और उसके अंदर एक empire हो गया, वो है collegium that will determine the judges. Many scholars argued India is the only country in the world where judges are judging themselves. India is the only country of the world where judges are judging themselves. ठीक है? So look at here, the collegium system was established. इसके बाद प्रेसिडेंट, इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद 1993 के बाद में एक थोड़ा और मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा आइडिया समझने के लिए. 1982 you had full majority government led by Indira Gandhi. 1993 you had coalition government, which is a weak government at the center. You remember when I said whenever there is a decline of legislature, the judiciary rises, the executive rises. You remember? Look at it. Right? So आप देखो यहाँ 1998 में भी वही बात है. राइट कि भाई गवर्नमेंट कमजोर थी, जुडिशरी ने कहा हम खुद करेंगे, हम जो बोलेंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा. राइट नाउ अब इसके बाद जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो वाजपेयी गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी हेल्ड बाय एन वेंकट चलैया and to recommend how judiciary judges should be appointed. Now Aman Bagh Chalaiya has suggested to set up National Judicial Appointment Commission. Right, this National Judicial Appointment Commission shall consist CGI plus 2 senior most judges and plus law minister and then 2 eminent jurists. Right, and this selection committee will find out the number of judges, and among them finding number of judges, the president shall appoint the judges. ठीक है, बट हुआ कुछ नहीं इस कमिटी का. व्हाई? बिकॉज वाजपेयी गवर्नमेंट वाज अगेन कोलिजन गवर्नमेंट. वाजपेयी गवर्नमेंट वाज अगेन कोलिजन गवर्नमेंट. राइट, बेसिकली इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ. जुडिशरी ने तो किया ही किया, बहुत लोगों ने किया. कभी कभी मतलब कभी क्या, हमेशा अपोजिशन भी इसलिए क्रिटिसाइज करती है कि उसका काम ही क्रिटिसाइज करना. कभी अच्छा हो तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया करो. दैट इज नॉट कल्चर. कल्चर इज डेवलप्ड. कोई भी कल्चर जो होता है ना, वो डेवलप करना पड़ता है, पॉलिटिकल कल्चर. राइट, तो ऐसा हुआ नहीं. और फिर आप देखेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट डिड नॉट पुट अटेंशन ऑन इट बिकॉज उनको भी पता था हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ये तो अपॉइंटमेंट यहां थी, उधर पीआईएल सुनना शुरू कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने. और फिर अभी बाद में बताऊंगा पीआईएल जुडिशियल एक्टिविज्म. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देना शुरू कर दिया सरकार को, ये करो, ये करो, ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, वैसे करो. राइट, तो बहुत बार ये भी कहा गया कि भाई यहाँ डेमोक्रेसी है या जुडिशियोक्रेसी है. यहाँ पर जुडिशरी चला रही है इस देश को कि पॉलिटिशियन चला रहे हैं. बहुत बहुत बड़ी बात हुई. आपने दिल्ली में लोग तो बहुत परेशान हो गए. राइट, 2 रीजंस लेट मी टेल यू. एक तो यहाँ पर जो भी रिच क्लास थे इसलिए परेशान हो गए क्योंकि उनको कहा कि भाई यहाँ से बाहर जाओ. आप दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं चलाओगे. व्हाई? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट. दूसरी बात, सीलिंग. सीलिंग कहा कि भाई कोई भी रेसिडेंशियल एरिया में दुकान नहीं होगा, सबको सील करो. राइट, क्यों? वहां पे पार्किंग की प्रॉब्लम है. राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए दिल्ली में बहुत परेशान हुए लोग. एनीवे, अब देखोगे कि
और ये थर्ड जजेस केस है। 1998 का जो केस है इसको बोलते हैं थर्ड जजेस केस। अब 2014 की बारी आती है। आप देखेंगे कि एनडीए गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी थी इनके पास, उसमें बीजेपी के पास खुद ही फुल मेजोरिटी था, 282 सीट्स थे। 2015 में इन्होंने क्या किया, एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया, राइट, टू अबोलिश द कॉलेजियम सिस्टम। और एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, यस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2015, राइट, ताकि ये कमीशन बनाया जा सके। अब होता क्या है कि दिस अमेंडमेंट एक्ट एंड द लॉ बोथ हैव बीन चैलेंज्ड इन द जुडिशरी, और जुडिशरी ने कहा कि ये दोनों अल्ट्रा वायरस है, both are basically ultra virus to the constitution. Why? Because it, it damages the independence of judiciary, and independence of judiciary is a basically basic structure of the Indian constitution. Sir, Yeah, that who is was called the fourth amendment. party that, बोलिए बोलिए। sir, who was the party that challenged the 99th Constitutional Amendment Act? Who was the party? Again, the party was Supreme Court Advocate on Records Association. Priyansh, party was Supreme Court Advocates on Record Okay, Association. sir. ठीक है, Okay, sir. दे चैलेंज द केस और बोला कि भाई ये जो आपने कर लिया है ना, लुक एट द सुप्रीम कोर्ट नाउ reinstated the collegium system, clearly stated that you cannot appoint us, we will appoint our own official, right? So who appoints judicial matlab judges in court? The collegium system. The president appoints on the advice given by the judiciary. अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें कौन है, 1+4, यही है ना, 1 CGI+4, यही कॉलेजियम है। अब ये क्या करती है, ये भेजती है गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करता है, इसको बोलते हैं MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका बैकग्राउंड एग्जामिन करेगी जजेस का, राइट, और बैकग्राउंड वो करके क्या काम, उसको एग्जामिन करके अपॉइंट कर देगी। बट मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट को लगता है MOP में कि कोई भी जज जो है वो सुटेबल नहीं है, तो वो उसको इसको बोलती है कि ये सुटेबल नहीं है, राइट। तो हो सकता है कि ये मान ले, अगर नहीं मानेगा तो गवर्नमेंट ने इन्होंने जो बोला है उनको करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। Recently, Supreme Court has advised to appoint Gaurav Kripal. सुना इसका नाम? इनके बाप भी जज थे और ये लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ही इज अ लॉयर, बट ही इज डिक्लेयर्ड गे, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इनको बनाओ, कोर्ट ने मना कर दिया, हम नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उन्होंने मान लिया, फिर उन्होंने अगर वो दोबारा फिर बोलते तो कर देते। तो जुडिशरी नहीं चाहती है कि सरकार से इतना, ठीक है ये नहीं तो ये, राइट, Sir, if बोलो। sir, if the government sits on the advice of the judiciary and don't act, so what will happen? There are lots of pro and cons in due No, to sir, the collegium system. अगर I am collegium saying that system की बात, हाँ बोलो बोलो। like the way the governor sits on the bill passed by the legislature, if the government of India or the president just sits on that advice and not appoint anyone and wait for every judge to retire, so what can the Supreme Court do in such case? Supreme Court cannot do in such case. It will be dysfunctional totally, right? It's called dysfunctional.
it happened that the question that you are posing, it happened in practice, let me tell you, right? अब हुआ क्या है कि आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट में काफी चल रहा है, अगर आप पिछले 3-4 साल का देख रहे हो, राइट? सरकार क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट को जिम्मे ठहरा रही है, भाई तुम्हारे अंदर बहुत प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुम अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे हो, हम तो नाम तो दे ही देते हैं, तुम अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? बहुत लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको ये कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, including the former vice president. He was very critical to the you know basic structure doctrine because it has limited the power of the parliament, right? तो ऐसा है प्रियांश, making sense? Who appoints judges? The president of India on the advice given by the college. But लिखा वही है, the president shall appoint judges of the Supreme Court or the High Court after consultation of the CJI. But ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। अच्छा, हाई कोर्ट का जो जज होगा तो वो वहां पर भी तो कॉलेजियम होगा, क्या यही कॉलेजियम काम करता है वहां पर? वहां पर ये कॉलेजियम काम नहीं करता है, वहां पर सीजीआई होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई प्लस एक और होते हैं, और प्लस 3 जो होता है ना वो हाई कोर्ट के होते हैं उनके कॉलेजियम में, और उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। Making sense? Right? This is how high court judges are appointed. The CGI +1 and 3 from the concerned high court. Then judges are appointed in the concerned high court, any high court that you pick up. They basically suggest to the president, and accordingly president appoints it. Finally president appoints it now. The authority is given to the president, right? Of course after the consultation of the CGI, but after CGI नहीं रह गया, वो क्या हो गया? वो collegium system हो गया, that was established by the judiciary, and still it is continuing. Lots of debate and discussion चल रहा है। अब collegium system का benefit भी है और उसका disadvantages भी है। benefit ये है कि intervention नहीं है political का, independent judiciary है ना, ठीक है? डिसएडवांटेजेस क्या है? नेपोटिज्म बहुत है, बहुत नेपोटिज्म है, राइट? उसके बाद आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट डेटा कास्ट स्ट्रक्चर देखेंगे आप, राइट? 80% अपर कास्ट है जुडिशरी में, आप थ्रू आउट जुडिशरी में ऊपर से नीचे तक की बता रहे। ओबीसी 11%, एससी 2%, एसटी 1%, लेस देन 1%. That is presence of the social background in the Indian judiciary, right? अभी ये भी बात हो रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की भी बात हो रही है कि भाई अब क्या होगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसे ऑल होता है ना, यूपीएससी की एग्जाम होती है, वैसे ही जुडिशियल की एग्जाम होगा, होना भी चाहिए। मैं बता रहा हूँ इतना करप्शन है ना इसमें भी, और एक है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू लो और नौकरी दो, राइट? तो सब अपने भाई भतीजे, बहुत पैसे की बात, 30-30 लाख लोगों ने रुपए दिए हैं नौकरी के लिए, 50-50 लाख लोगों ने रुपए दिए। आपने ये सुना 2006 के बाद यूपी में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए हैं उसमें मेजॉरिटी जो प्राइस है वो 30 लाख है। यू नो दिस फैक्ट अभी हुआ है, और यूपी ने एग्जाम कैंसिल कर दिए। क्या नेट तो बस एलिजिबिलिटी है बाबू, नेट एलिजिबिलिटी है। बेसिकली यूपी में एक हायर एजुकेशन है जिसको बोलते हैं यूपी हायर एजुकेशन बोर्ड ऐसे करके, एग्जामिनेशन बोर्ड, और एक होता है यूपी पीसीएस, वो भी एग्जाम कंडक्ट करती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। बट वहां तो सब पैसा का मामला चलता है, आपने एग्जाम पास कर लिया, डजंट मैटर, पैसा है कि नहीं है, और पैसा पहले पकड़ लेते हैं, पहला पैसा पहले लेते, एग्जाम से पहले भी लोग लगा देते हैं। अब एक कॉस्ट रहता है कि अगर आपने कर लिया तो आपका लगवा देंगे, अगर आप नहीं कर पाए तो आपका पैसा रिटर्न होगा, बहुत सारा चीज चलता है। एनीवे, बट यस, ये है 2 एग्जाम मैंने बताया, जुडिशरी एंड
this assistant professor. No exam, no appointment should be done on the mere basis of interview. नहीं तो होता क्या है, अपने भाई भतीजे, लुक एट जो होता है पूरा हर जगह पे वही हो रहा है, राइट। चलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट 5 इयर्स में लोग छपरा यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी लोग पढ़ा रहे, लुक एट, राइट। मैं भी बहुत कॉलेज में दिया था, मतलब क्या नाम है, इंटरव्यू। आई वी नो दैट रिजल्ट। मैंने 3-4 कॉलेज में दिया था। आई वेंट, मैं भी जुगाड़ लगा के दिया था। मैं ऐसे कैसे बोलूंगा कि नहीं जुगाड़, आई हैव आल्सो पुट सम जुगाड़, बट दैट डिड नॉट वर्क। दैट इज डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। गॉट द आइडिया? लुक एट द करप्शंस इन जुडिशरी, इट्स टोटली करप्ट। नाउ अभी आज न्यूज़पेपर में आया है, आपने करप्ट कैसे बोल दिया? चोर को चोर बोल दो तो बड़ा गुस्सा हो जाता है उसको। नहीं, चोर को चोर बोल दो, कोई काना है उसको काना बोल दो, तो मुझे काना बोल दिया, so that is a issue. Now write about appointment of judges. कुछ लिखवाया नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे लिखिए। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 and article 217 and article 217 deals with appointment of judges, deals with appointment of judges in the Supreme Court and High Court respectively. In the Supreme Court and High Court respectively. Next point, judges are appointed by the President. Judges are appointed by the President. Judges are appointed by the President after consultation with Chief Justice, and other judges of the Supreme Court, and of the High Court respectively. समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट के ये पांच लोग होते हैं, और हाई कोर्ट के मामले में ये केवल सुप्रीम कोर्ट से होते 2 लोग, अदरवाइज हाई कोर्ट के भी लोग होते। गॉट आइडिया? देखिए, टिल 1973 the executive appointed judges on the basis of seniority. Till 1993 the executive appointed judges on the basis of seniority. समझ में आया? देखिए, the Indira Gandhi government, next point, Indira Gandhi government appointed A.N. Ray, Priyansh बोल रहा है because there is a no reservation, merit counts there. Merit is a myth, Priyansh. किसी का बेटा होना मेरिट नहीं है। जुडिशरी Sir, में but अगर आप if the examinations are conducted, then the reservation will also apply in the judiciary, and then the people who have less merit will come. सुनो, मेरिट डिसाइड होता है हमारे सामाजिक, आर्थिक
right? Context decide करता है. The merit is decided by our social condition and economic condition, right? And access to resources. That decides merit. What idea? मैंने आपको मेरिट अब बताया भी था, कोई 90% लाता है और कोई 85% लाता है. In first appearance, you may see that 90%, the person who actually acquired 90% is more meritorious. But if you go deeper and see the socio-economic background of the people who, of the both, then actually you would be able to decide the merit. Sir, but But that merit, if you say, is useless, huh? If there is a person who had access to higher education due to his family background, so he had education and now the merit is developed in him. But a person in whom the merit is not developed, any other person is not responsible for that. If he is given the position, it will lead to problem for the society. For example, if there is a Dalit who become a doctor because of the reservation and he had less merit, then it will be loss for whole society, not only the people who are losing jobs but also the people who are going to that doctor. Even if the Dalit will go to that doctor, he will be having the loss of having lower quality doctor who is having low merit because of his background. So such mercy or such kind of provisions are destructive for the society. have you some low grade doctor as you suggested? Have you ever seen? मैंने भी सुना है. Have you seen कि लोग ऑपरेशन करके कैंची अंदर छोड़ देते हैं? सुना है Sir, ना? This is all myth. Let I me have not been in the contact with doctor, मैंने fortunately. आपको मैंने क्या कहा, ये ऑल क्या है? ये एक तो एजुकेशन जो मैं दे रहा हूं और एक एजुकेशन क्या है जो आप लेके आए हो सोसाइटी से, है ना? आपको घर में कहा गया है, आपने सुना है, आपने पढ़ा है, राइट? जस्ट गिव मी सम डेटा, सम फैक्ट, सम argument from one Sir, scholar. we cannot give the facts on on this because the government is not researching on this. The government had not conducted any research over the functions of the people who are नहीं जैसे प्रियांश selected by reservation and और who are selected on the merit. The government has not conducted any kind of survey over that. It is the problem of the government. प्रियांश there is a survey not in medical science but in railway. there is a railway में रिजर्वेशन है ना, तो एक सर्वे हुआ था कि whether this reservation led to deficiency in administration in railway or not, right? And there is no deficiency of administration in railway due to the reservation. There is a report. ऐसा है. Anyway, now come to the major point agenda. क्या लिखा है मैंने? Henry and bypassed three senior most judges and bypassed three senior most judges. Bypassed three senior most judges. Okay. All three senior most judges resigned from their post. All three senior most judges resigned from the post. In 1976, the government appointed M.H. Bagh. In 1976, the government appointed M.H. Bagh. In 1976, the government appointed M.H. Bagh and bypassed two senior most judges. Two senior most judges. Okay. Therefore, case was filed in the Supreme Court. Case was filed in the Supreme Court to explain the word
to explain the phrase consultation with CGI. Consultation with CGI. Consultation with CJI. Right, in 1982, yeah, in 1982, the Supreme Court in SP Gupta versus Union of India case. In 1982, the Supreme Court in SP Gupta versus Union of India case held that consultation does not mean concurrence. Consultation does not mean concurrence. Next point, in 1993, the Supreme Court in Supreme Court Advocates on Record Association, Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India case. Supreme Court Advocates on Record Association. Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India overruled SP Gupta judgment. Overruled SP Gupta judgment. Overruled SP Gupta judgment. बड़ा इंटरेस्टिंग है जब ये आप देखेंगे 1993 में यहाँ पर 9 जजेस का बेंच था. 7 ने कहा कि भाई एसपी गुप्ता का जजमेंट गड़बड़ है. 2 एक्चुअली अपहेल्ड द एसपी गुप्ता जजमेंट. ठीक है, ना डिटेल में जाना नहीं है. देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस. The word consultation means concurrence. The word consultation means concurrence. The word consultation means concurrence. The president will consult. The president will consult. The president will consult Chief Justice. Chief Justice and 2 more judges. 2 more judges for the appointment of judges. एसपी गुप्ता केस जहां पर छोड़ा है उस पर थोड़ा जगह है, उसमें ब्रैकेट में लिख दिए फर्स्ट जजेस केस. इसी को फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं. मैं थोड़ा भूल गया बोलना डिक्टेशन के वक्त. जहां पर एसपी गुप्ता का लिखा है ना, वहां पर सीधा फर्स्ट जजेस केस लिख दीजिए ब्रैकेट में. एसपी गुप्ता जजमेंट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जजेस केस. ये 1993 वाला हो गया, राइट? डन ना. The president shall consult Chief Justice of India and 2 senior most judges. Okay, this is called as second judge's case. This is called as second judge's case. This is second judge's case basically. Right? Okay, in 1998, next point, in 1998, the Supreme Court in, का नाम है
presidential reference case. Presidential reference case held that आप सिंपल इन 1998 सुप्रीम कोर्ट held that या थर्ड जजेस केस भी लिख सकते हैं, याद ना रहे तो जरूरी नहीं है इसको याद रखना. इन presidential reference case, Supreme Court held that the word consultation means concurrence. The word consultation means concurrence. The word consultation means concurrence. The president shall ask. The president shall ask. President shall consult. Ask छोड़ दीजिए. Ask को काट दीजिए. The president shall consult Chief Justice of India. Chief Justice of India and a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court. The President shall consult Chief Justice of India and a collegium of 4 senior most judges. In order to appoint or in appointment. बट मान लो कि 4 मतलब 1+4 है, इसमें से अगर यहां पर 2 ने कह दिया कि नहीं इसको नहीं करना है तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मेंशन किया कि अगर इस 4 में से 2 ने निगेट कर दिया तो भी आप अपॉइंट नहीं करेंगे, राइट? लिखिए, however the Supreme Court clearly mentioned that if 2 judges give adverse opinion, if 2 judges of the collegium give adverse opinion, if 2 judges of the collegium give adverse opinion, then the CGI should not send the recommendation. Then the CGI should not send the recommendation to the government for the appointment. मतलब समझ में आया कि यानी कि इन 5 में से इनका भी होना चाहिए और यहां से 3 का भी होना चाहिए. 4 है बट 3 होना चाहिए. एक हो सकता है, एक एडवर्स ओपिनियन दे सकता है, राइट? यानी कि 4 लोगों की सहमति होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कॉलेजियम में से 3. ठीक है, नींद आ रही है? ब्रेक चाहिए तो थोड़ा सा इसको खत्म कर लेते ना, उसके बाद ब्रेक लेंगे. 2 मिनट मतलब 5 मिनट और मुझे दे दो. ये हो गया ना? देखिए, इसके बाद लिख दीजिए थर्ड जजेस केस, ब्रैकेट में लिख के थर्ड जजेस केस लिख दीजिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड जजेस केस. थर्ड जजेस केस, राइट? देखिए, in 2002 the NDA government appointed a committee headed by M. N. Venkat Chalaya. In 2002, what does senior most mean? Senior most means age नहीं होता है,
एक्सपीरियंस होता है, टाइम कितना सर्विस दिया दे चुके हैं. यस, प्रियांश हैज रिटन सर्विस टाइम इज काउंटेड. क्या लिखा? The NDA government set up a committee headed by M.N. Venkat Shalaiya to examine the appointment of judges. To examine appointment of judges. The committee suggested to set up National Judicial Appointment Commission. The committee suggested to set up a National Judicial Appointment Commission. The committee suggested to set up a National Judicial Appointment Commission consisting of CJI, two senior most judges, law minister, and two eminent jurists. Two eminent jurists, eminent jurist, EMININT, eminent jurist. What the idea? Now, right, in 2015, coming to the end, in 2015, the government passed 99th Constitutional Amendment Act. In 2015, the government passed 99th Constitutional Amendment Act and National Judicial Appointment Commission Act. And National Judicial Appointment Commission Act. 99th Amendment Act, 99 CAA, and National Judicial Appointment Commission Act. In order to abolish collegium system. In order to abolish collegium system. In order to abolish collegium system. Okay. Last point. The Supreme Court in Supreme Court Record Advocates, Supreme Court Advocates on Record Association, the Supreme Court in Supreme Court Advocates on Record Association, जो 1998 में था, सेम एसोसिएशन ने चैलेंज किया था. सुप्रीम कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस invalidated 99th Constitutional Amendment Act, invalidated 99th Constitutional Amendment Act, and National Judicial Appointment Commission Act. And National Judicial Appointment Commission Act. The court held that the amendment, the 99th Amendment or the amendment and the law, the amendment and the law, I'm talking about in context, matlab the laga raha hu, right? The amendment and the law are ultra vires to the constitution, are ultra vires to the constitution, are ultra vires to the constitution,
It is violating independence of the judiciary. It is violating independence of the judiciary. Which is the basic structure of the Indian Constitution. Which is basic structure of the Indian Constitution. Which is the basic structure of the Indian Constitution. Hence, the Supreme Court reinstituted the collegium system. Hence, the Supreme Court reinstituted collegium system for the appointment. Now 10-minute break and we'll resume after 10 minutes, right? After 11:10 we'll resume 11 at 11:20. Hello, hello, am I audible? Shelly, Shashank, Sanskriti, Priyans, come inside. Deepika, yeah. So look at this collegium system has restored in 2015. ठीक है इसमें और कुछ दैट्स अ कॉलेजियम और कुछ भी बताने हैं और बहुत सारी डिबेट है दैट कि कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है या बुरा है भाई अच्छा भी है बुरा भी है ठीक है अच्छा क्या है कि इट मेंटेन्स इंडिपेंडेंसी it does not allow politicians to intervene बुरा क्या है it is very much full of nepotism
Now let me tell you some certain basic facts about the judges. ये एसओपी ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है, या लिखवा दूं? Basically, the collegium system recommend to the government, right? And government basically then check the background of the judges, that is called memorandum of procedures. And if government finds certain judges which is not basically fit, then it basically goes back to the collegium. This, just rethink on this judge. But if the collegium again passes the advises the same judges, then the government has to appoint it. There is no other way. Aji, the government has to appoint it. Okay. Now, in case of High Court, see the collegium, Chief Justice of India +1 and 3 judges of the High Court. ठीक है, अगर मान लो कि ऑफ कोर्स या CGI +2 senior most, तो ये कॉलेजियम है हाई कोर्ट का. Look at the qualification of the judges. What should be the qualification? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये भी आर्टिकल 124 कहता है. क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, citizen of India. Second, a person should have experience, of a lawyer, or person should be lawyer in any high court for 10 years, right? Or judges for the 5 years. Okay? So लिखिए, the person should be a lawyer. The person should be a lawyer. The person should be a lawyer either in the High Court or the Supreme Court. The person should be, second one, person should be a lawyer in the High Court or Supreme Court for 10 years. For 10 years. For 10 years. Or he should have been a judge of a High Court. He should have been a judge of High Court. He should have been a judge of High Court for 5 years. For 5 years. Yeah, or he should be a distinguished jurist. Or he should be a distinguished jurist in the opinion of the president. Right? तो लॉयर होगा कितने साल के लिए? लॉयर का एक्सपीरियंस कितने साल के लिए? 10 साल के लिए. या जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में. या डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट के ओपिनियन में. मिनिमम एज नहीं है यहाँ पर. देयर इज नो मिनिमम एज बार. कितने साल होना चाहिए? नॉट एन इशू. Let me tell you, when I was teaching just 2 years ago, आपको ही क्लास में पढ़ा रहा था, उस जज के बारे में बात कर रहा था, right? I suddenly I read newspaper और उसको मैंने टाइटल तो वही लग रहा है. Then I just investigated, then I found the person is son of the judges of the Supreme Court. Now after few years, I heard that lawyer is doing practice in Allahabad High Court and getting most precious cases. ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि वो जज बनने वाले हैं या जज बनेंगे, राइट? तो बनेंगे तो 5 साल पूरा होगा, नहीं उनका तो 10 साल पूरा होगा तब बनेंगे, राइट? बट यस, देयर इज ऑलरेडी टॉक कि दे विल बी द जज. अगर आप देखेंगे एक रिपोर्ट है दैट इज कॉल्ड नेशनल प्रोजेक्ट 39
176 family of India controls the higher judiciary, right? Anyway, आज ये हो गया, क्या नाम है, क्वालिफिकेशन हो गया, मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है. Sir, what Yes, is go the ahead. jurist? Jurist मतलब होता है कि कोई लॉ का ज्ञानी हो, right? That person should be, a scholar of the law. There are many scholars teaching in Sir, university. I Yes. mean हाँ, a person with a formal law degree or a person who the executive considers as a jurist. हो सकता है. But of course, collegium system will consider the person jurist according to the present context, right? But jurist जब बात करते हैं तो person who has knowledge of law, right? Now, right, oath and affirmation. Who administer oath and affirmation? And affirmations कौन एडमिनिस्टर करता है? The president, right? देखिए, the president or some person appointed by him, the president, or a person appointed by him may administer the oath and affirmation to judges. The president or a person appointed by him administers oath and affirmation to judges. अच्छा, सैलरी एंड अलाउंसेस क्या है? It is determined by the parliament. It is determined by the parliament by law. It is determined by the parliament by law. From time to time. It is determined by the parliament by law from time to time. From time to time. Who decides it? Acha, can salary and allowances be diminished during the tenure of the judges? Cannot, except the financial emergency. Right? Like the salary and allowances of judges cannot be reduced. The salary and allowances of judges cannot be reduced. The salary and allowances of judges cannot be reduced during the tenure. Salary and allowances of judges cannot be reduced during the tenure, except during a financial emergency. During a financial emergency. अच्छा, टेन्योर कितना है? ये टेन्योर कितना है? अच्छा, टेन्योर कितना है जजेस का? हाँ, एज मतलब टाइम नहीं फिक्स्ड है. टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड है. क्या यहाँ पर एज फिक्स्ड है? राइट. In case of Supreme Court, it is 65, or in case of High Court, it is 62, right? So, लिखिए, the Constitution does not fix the tenure of a judge. The Constitution does not fix the tenure of a judge. The Constitution does not fix a tenure of a judge. Judge of the Supreme Court. However, it
makes three provisions. It make it makes three provisions. First, first, judges shall hold office until he attain the age of 65 years. Judges shall attain Judges shall hold office. Judges shall Judge shall hold office until he attains age of 65 years. अच्छा, अब मान लो कि इनके एज में कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा कि इनका एज इतना है? कभी भी ऐसा भी हुआ है, पता है आपको? लोग के दो दो तीन तीन डेट ऑफ बर्थ होते हैं, रियल कुछ और डॉक्यूमेंट में कुछ, और वो डॉक्यूमेंट में कभी कभी वेरी कर जाता है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ, उस डॉक्यूमेंट में कुछ। पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ करते थे, राइट? 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, राइट? नाउ it can be determined by a body authorized by the parliament. लिखिए जरा, देखिए, any question regarding the age, next point, yeah, any question regarding the age is to be determined by such authority. Any question regarding the age is to be determined by such authority and such manner, such authority and such manner as provided by the parliament, as provided by the parliament, as provided by the parliament. Next one more, तीन बोला था ना, थर्ड है, yes. देखिए, the parliament can remove, the parliament can remove, the parliament can address an order, ऐसे लिखिए, the parliament can address an order, the parliament can address an order, and consequently the president can remove, the parliament can address an order, and consequently parliament can address an order, and consequently the president can remove, judges. तो आज ये थोड़ा रिमूवल के बारे में देख लेते हैं, रिमूवल कैसे होता है इनका। रिमूवल, लेट मी टेल यू, एक तो ग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ग्राउंड क्या है, एक होता है प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल प्रोसेस क्या फॉलो होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ग्राउंड क्या होगा। दूसरी बात ये करता है कि मेजोरिटी क्या फॉलो होगी, जो पार्लियामेंट में फॉलो होगी वो मेजोरिटी क्या फॉलो होगी, ठीक है। और प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस फॉलो बताता है हमारे पास जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है ये। इट डिसाइड्स द और इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। तो और ग्राउंड क्या है? दो ग्राउंड है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट टू ग्राउंड्स, लिखिए तो रिमूवल में ग्राउंड ऑफ रिमूवल। The Constitution talks about two grounds of removal for judges. Constitution talks about the Constitution talks about two grounds of removal
for judges. Constitution talks about सारा अपॉइंटमेंट सारा सेम है, कुछ अंतर नहीं है. Constitution talks about two grounds of removal for the judges, namely misbehavior and incapacity. Misbehavior and incapacity. Constitution talks about two grounds of removal for judges, namely misbehavior and incapacity. The president, next point, the president can issue a removal order. The president can issue a removal order. The president can issue a removal order when the parliament. The president can issue a removal order when the parliament pass a removal order and presented to the president रहने दो, मैं आ रहा हूं, and presented to the president in the same session. That's very important. Presented to the president in the same session for such removal. समझ में आया? पार्लियामेंट पास करेगी और उसी सेशन में प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा उसको, तब प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेंगे. मान लीजिए कि कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट के? 3 सेशंस होते हैं. तो मान लो कि बजट सेशन में अगर ये चला है तो बजट सेशन में ही उसको वहां खत्म हो जाएगा, राइट. वो दूसरे सेशन में नहीं जा सकता, राइट. अभी रिमूवल ऑर्डर के लिए मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, राइट. जो वर्मा साहब है, वर्मा है ना, जिनके घर पे पैसा पकड़ा गया, उन्होंने बोला कि पता नहीं मुझे ये पैसा आ कहां से गया, चलते चलते, है ना. लुक एट. और फिर क्या बोल रही है सुप्रीम कोर्ट कि करप्शन नहीं है, राइट. मैंने हिंदू में पढ़ा, अभी नीचे गया था तो बैन लगा दिया बेसिकली. सुप्रीम कोर्ट हैड बैंड एनसीईआरटी बुक्स. लुक, और बोले जितना पब्लिश किया सबको पीछे वापस ले आओ. हॉरिबल, राइट. एनीवे, क्या लिखा हमने? द पार्लियामेंट मस्ट पास with the same session. The parliament passed the order and present to the president in the same session for such removal. The constitution does not explain the procedure to be followed. The constitution does not explain procedures to be followed. The constitution does not explain procedure to be followed for the removal of judges. Next point, the parliament passed Judges Enquiry Act 1968. Next point, the parliament passed Judges Enquiry Act 1968. Which provides following procedure. Which provides following procedures. ठीक है. अब प्रोसीजर लिखते हैं. क्या क्या है प्रोसीजर इसका?
पहला प्रेशर है कि देखो अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो 100 मेंबर इसको सपोर्ट करेंगे, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो 50 मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद रिमूवल, वो जो रिजोल्यूशन है दैट विल गो ऑन। जब रिमूवल रिजोल्यूशन प्रेजेंट होगा तो अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे है कि वो एक्सेप्ट करेगा या उसको डिनाई करेगा। यहां पर उसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के टर्म में नहीं है। लेट मी टेल यू, इन प्रेसिडेंट के टर्म में हम इम्पीचमेंट यूज करते हैं। आपको कहीं भी टर्म इम्पीचमेंट दिख जाए, बेसिकली इसके जजमेंट के केस में दिख जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट द टर्म इम्पीचमेंट इन केस ऑफ द जजेस, इट्स रिमूवल ओनली। ठीक है, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास आएगा तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट भी करेगा या उसको डिनाई कर देगा। राइट, इसके केस में कर सकता है, प्रेसिडेंट के केस में नहीं, डिनाई नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो समझेंगे। अब उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, देन he or she will constitute a committee consisting of CGI plus CGI of any high court, right, and independent any distinguished jurist। 3 मेंबर कमेटी होगी। 3 मेंबर का कमेटी कौन कौन होगा, राइट, सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, सॉरी सीजीआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या अगर सीजीआई के खिलाफ है तो सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद कोई भी किसी भी हाई कोर्ट का एक सीजीआई, किसी भी एक हाई कोर्ट का, और तीसरा अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये 3 लोगों की मेंबर बनेगी, राइट, एंड दिस कमिटी विल इन्वेस्टिगेट द केस, राइट, एंड इफ दिस कमिटी finds that the judge is guilty of misbehavior or incapacity, then this committee will submit a report to the house जहां पर ये इंट्रोड्यूस हुआ है। राइट, अब क्या होगा, अब वहां पर वोटिंग होगी, राइट, डिस्कशन भी होगी और वोटिंग होगी। एंड वोटिंग जब होगी तो दैट रिमूवल रिजोल्यूशन must be passed by a special majority. Now what is that special majority? In not 2/3, the majority of the total member of that house, and a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। दो कंडीशन है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस वो भी होना चाहिए, प्लस अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर वो पास हो गया उस हाउस से तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा, and the second house also will pass it with the special majority, right, when the both houses will pass it within the same session, let me tell you, within the same session, then the president will issue and removal order। no judges so far has been removed, got the idea, right? वैसे इंट्रोड्यूस हो चुका है रामास्वामी के खिलाफ, राइट, बट कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया उसको। वो कमिटी ने भी एक्सेप्ट भी हो गया था, कमिटी फाउंड हिम फॉर मिसबिहेवियर, बट कांग्रेस वर्कड आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट इन 1990, इट्स अबाउट 1990, राइट। अभी देखो, अभी इस हाल में क्या होगा, आई थिंक एक 108 मेंबर्स हैव साइंड, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। दैट्स इट। सो कुछ लिखवाया प्रेसिडेंट के बारे में? नहीं, पहले लिखिए, पहला फर्स्ट पॉइंट, तब आप उसको पढ़िएगा। मैंने फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द रिमूवल मोशन must be signed by 100 members। The removal motion must be signed by 100 members in the case of the Lok Sabha। The removal motion must be signed by 100 members, 100 और मोर हो सकता है,
100 और मोर भी हो सकता है, मतलब केवल 100 नहीं, एटलीस्ट 100 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर तो रिमूवल मोशन मस्ट बी साइंड बाय 100 and more members in the case of Rajya Sabha, or in case of Lok Sabha, or by 50 or more members in the case of Rajya Sabha. 50 or more members in the case of the Rajya Sabha. And it is presented to the presiding officer. And it is presented to the presiding officer. ठीक है, ये पहला प्रोसेस है। ठीक है, लोकसभा में कितने लोग? 100 MP। राज्यसभा में कितने लोग? 50। राइट। अब सेकंड क्या है? देखिए, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे रिजेक्ट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे एडमिट or reject the removal motion. The presiding officer may admit or reject the removal motion. हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड प्रोसेस लिखे, if the removal motion is admitted, if the removal motion is admitted, if the removal motion is admitted, then the presiding officer set up a committee, then the presiding officer set up a committee consisting of CJI, TJI or senior most judges of the Supreme Court. मान लो सीजीआई के खिलाफ है तो क्या होगा? सीजीआई नहीं होंगे, फिर उसमें कौन होगा? सीनियर मोस्ट होगा, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है सीनियर सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कॉमा a chief justice of high court, a chief justice of high court, a chief justice of high court, and a distinguished jurist, a distinguished jurist. ठीक है, now next point देखिए, the committee will investigate charge. The committee will investigate the charge. The committee will investigate the charge. Right? And it will submit a report to the House. And it will submit a report to the House. And it will submit a report to the House. If the committee finds judges guilty of, if the committee finds judges, if committee finds judge to be guilty of incapacity or misbehavior, finds the judge to be guilty of incapacity or misbehavior, then the House can take the motion. Can take the motion. मान लो रिपोर्ट दिया और है ही नहीं, तब तो कुछ होगा ही नहीं, right? But if the committee finds, finds judge to be guilty of misbehavior and incapacity, then House can take the motion. हो गया? The next step.
नेक्स्ट स्टेप देखिए, द रिमूवल मोशन मस्ट बी पास्ड, the removal motion must be passed, the removal must motion must be passed by a special majority of each house. The removal motion must be passed by a special majority of each house, that is a majority of the total member of that house, that is a majority of total member of that house, and a majority of not less than, and a majority of not less than two-thirds of members, majority of not less than two-thirds of the members of that house present and voting, present and voting, present and voting. Got the idea, right? Okay. Next point, the last point. Okay. If both houses passes the removal resolution, अब देखो मैं ऊपर में रिमूवल मोशन लिख रहा था, यहाँ पर रिमूवल रिजोल्यूशन लिखा है, राइट? इंटेंशन लिखवाने का, क्योंकि यहाँ पर ओपिनियन ऑफ द हाउस ये है कि अब उसको हटाओ, राइट? इसलिए रिमूवल रिजोल्यूशन यहाँ पर वर्ड यूज है, ऊपर भी मैंने मोशन वर्ड यूज किया था. व्हाट इज द रिजोल्यूशन एंड व्हाट इज द मोशन? When motion is accepted by the house, then it is called resolution. So every resolution is a kind of a motion, but vice versa is not true. तो क्या लिखा? Resolution. Then the president issue an order. The president issue an order to remove judge. To remove judge. To remove judge. अब क्या है कि कितने जज रिमूव हुए हैं? ना आज तक कोई प्रेसिडेंट रिमूव हुआ है, इम्पीच हुआ है, ना ही जज रिमूव हुआ है. However, removal basically there has been a case proceedings initiated against Ramaswamy. His name was Justice V. Ramaswamy. लिख लीजिए नोट में. No judges has been removed so far. No judges have been removed so far. No judges have been removed so far. देखिए, the parliament started case against V. Ramaswamy. The parliament started case against Justice V. Ramaswamy. The parliament started case against Justice V. Ramaswamy. The parliament started case against V. Ramaswamy. V. Ramaswamy. The committee found him guilty of misbehavior. The committee found him guilty of misbehavior. Capacity का नहीं, incapacity का नहीं, misbehavior. But the parliament could not pass the removal motion. But the parliament could not pass the removal motion. Right? That's a removal process.
आज इतना ही. Now tomorrow अब थोड़ा ही रह गया, power and functions of the judiciary, then judicial review, judicial activism, right? कुछ और बातें judiciary के बारे में, right? क्या क्या challenges है judiciary को लेकर के आज. I'll stop here. Any query if you have? अच्छा कल क्लास है, समझ ये मिला इंफॉर्मेशन? अभी तक नहीं मिला? टुमारो वी हैव क्लास, ठीक है? टाइमिंग 10 to 1. You'll get information. You'll have class tomorrow. ठीक है? You'll get information. मैं बोलता हूँ, कल भी मेल किया. चलो, see you tomorrow. संस्कृति, प्रियांश, मुस्कान, दीपिका, आशु, शरिता, शशांक, तमन्ना.